So we'll see about the hate speech. So Indian provision criminalize करता है स्वर. स्वर means speeches, signs, writings, action and representation that instigate violence and spread disharmony in the society. That instigate violence and spread disharmony in the society. So law provisions decriminalize स्वर that instigate violence and spread disharmony. यहाँ पे स्वर का फुल फॉर्म है स्वर, दैट इज स्पीचेस, साइंस, दूसरा साइंस, राइटिंग्स, एक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन दैट इंस्टिगेट वायलेंस एंड स्प्रेड डिसहार्मनी विद इन द कम्युनिटीज़. सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हेट स्पीच क्या है? जनरली एन इंसाइटमेंट टू हेटरेट प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीव एंड द लाइक. तो हेट स्पीच क्या होगा? इट इज़ एन इंसाइटमेंट टू हेटरेट प्राइमरी अगेंस्ट अ ग्रुप. आप एक हेटरेट फैला रहे हो एक ग्रुप के अगेंस्ट, किसके टर्म में? इन द टर्म्स ऑफ या तो रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड रिलीजियस बिलीव. कैन रिमेंबर इट बाई रेक्स. रेक्स में रेस, रिलीजियस बिलीव, ई से हो जाएगा हमारा एथनिसिटी, जी से जेंडर, एस से सेक्शुअल ओरिएंटेशन. तो रेस, रिलीजियस बिलीव, ई से हमारा एथनिसिटी, जी से जेंडर, एस से सेक्शुअल ओरिएंटेशन. तो यहाँ पे सेक्शन है 153A एंड 295A. रीड विथ सेक्शन 298 ऑफ IPC. तो हेट स्पीच क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? दैट इज हेट स्पीच इज एनी वर्ड, रिटन, स्पोकन और साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन विद इन द हियरिंग और द साइट ऑफ अ पर्सन with the intention to cause fear or alarm or incitement to violence. So it is a limitation on free speech. Free speech 19 आर्टिकल में जो है उसमें लिमिटेशन है हेट स्पीच. तो इट इज़ अ लिमिटेशन ऑन फ्री स्पीच that expose a group of the people to harem. Harem means hate, ridicule, indignity and violence. Hate, ridicule, indignity and violence. Harem means hate, ridicule, indignity and violence. तो इसमें ट्रीट करने के लिए हमारे यहाँ है सेक्शन 153A एंड सेक्शन 505. तो ये IPC की है, ये पनिश करते हैं जो हेट स्पीच देता है. तो अंदर सेक्शन 153 कैपिटल यहाँ पे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एंड डूइंग एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद 3 years इम्प्रिजनमेंट. यहाँ पे 5 साल की सज़ा होती है अगर ये जो काम किया आपने प्लेस ऑफ वर्शिप पे किया है, रिलीजियस वर्शिप या रिलीजियस सेरेमनीज़ में किया है. सेक्शन 505 डील करता है स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ. एक 505 सब क्लॉज 1 में है दैट प्रमोट्स म्यूटिनी बाय आर्म फोर्सेस और causes fear or alarm that people are induced to commit an offense. So commit an offense against the state and or public tranquility. So causes a fear or alarm that the people are induced to commit an offense against the state and or public tranquility. Or it intended to incite any class of community to commit offense against another class or community. एक कम्युनिटी इंसाइट कर रही है ऑफेंस करना टू another class of community. तो इसमें भी 3 साल की जेल हो जाएगी सेक्शन 505 सब क्लॉज 1 में. सेक्शन 505 सब क्लॉज 2 में बोला जाता है इट इज़ एन ऑफेंस टू मेक स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेट्रेट और इल विल बिटवीन क्लासेस. और रिलीजियस प्लेसेस में अगर ये हेट्रेट स्पीच दी जाती है तो 5 साल का जेल टर्म होगा. वैसे 3 साल का होता है लेकिन रिलीजियस प्लेसेस में या असेंबली इंगेज इन रिलीजियस वर्शिप वहाँ पे होता है तो यहाँ पे 5 साल की जेल होगी. तो लॉ कमीशन ने बोला है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है सेपरेट आपको प्रोविज़न डालने चाहिए दैट डील विथ हेट स्पीच इंस्टेड ऑफ बीइंग सबस्यूम्ड इन द एग्जिस्टिंग सेक्शंस. सो इफ समवन इंडल्ज इन फ्री हेट स्पीच देन देयर शुड बी that person should be provided a lawful way of expressing their opposition rather than curbing freedom of speech and expression. So if someone got offended, then there should be lawful way so that person can express their opposition rather than not to focus on curbing freedom of speech and expression because of individual incidents like this. Like Dharam Sabha take place in Haridwar in December 2021. सो पीपल नीड टू लर्न द वे टू रिस्पॉन्ड इन द केस दे फील ऑफेंडेड. अगर लोग ऑफेंड हो जाते हैं तो उन्हें आना चाहिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है. लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना है. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पीपल डू नॉट टेक वायलेंस इन देयर ओन हैंड वी नीड टू इंक्रीज द फेथ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. वी नीड टू स्ट्रेंथन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे दीज इंडिविजुअल इंसिडेंसेस ऑफ हेट should not be used as a justification to curb freedom of speech and expression.
मतलब कहीं कहीं हेट अगर स्पीच यूज़ हो गई, हेट स्पीच यूज़ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन को बंद कर दो. सो दीज इंडिविजुअल इंसिडेंसेज ऑफ हेट शुड नॉट बी यूज एज अ जस्टिफिकेशन टू कव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस टू स्टॉप समबडी फ्रॉम गेटिंग ऑफेंडेड. ऐसा नहीं है कि कोई ऑफेंड ही ना हो, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन कम कर दो. वी हैव टू मूव टू प्रोवाइडिंग दैम लॉफुल मीन्स, and we need to look for the lawful means available to them to take records of such kind of offense. अगर वो offended होते हैं तो क्या क्या उनके पास method available है to take records to such kind of act. So meaning of records means having to use something to ask someone for help in difficult situation. That is records. So individual tastes and beliefs vary. We know that individual taste and beliefs vary, but issue is not that there is a variety of beliefs and there is a variation and there is diversity, but the issue is that how these are expressed in a democratic country, how these variation are expressed in a democratic country. The Gandhi is very relevant here. So he knows the method of handling distress, because people will express their views and will cause distress in the society. The problem is not the distress, but how these distress are handled. So Gandhi is very relevant. So everybody expresses their freedom of speech and expression differently. For example, for a rich people, for the liberal section, if we see that pornography should not be banned, it is a freedom of speech and expression. For poor, they express it in a different way. Many times there is a curve of movie, books and speeches, media, journals and newspapers. So there are the three stakeholders involved in any kind of hate speech. One who is making a statement and provoking hate speech, other who are opposing it, and third one who was interpreting the situation and keeping the issue alive. So all of these three, whether they are making statement, other who are opposing the statement made, and third one who is interpreting the statements and taking the sides of either the one who was making a statement and the other who is opposing, all of these are held responsible for violence. If violence takes place in any of these area, all of these should be held responsible. So all of them should be equally take the responsibility of maintaining the law and order. So wherever the law and order, peace and distress, all of these communities should be held responsible. So we are in the 21st century and we must inculcate the feeling of free debates and discussion on the people's faiths and beliefs. It should not be rigid. So people must be ready to listen even against their faith and beliefs. So we have to inculcate the feeling of intolerance among the people so that people do not get easily offended. So earlier, prior to the 21st century, in the past, there was a lot of debate and discussion held in various religions, ceremonies. But now, even today, why we are moving backward. So these are done for the political gains and social gain. No religion, no God is too weak to get affected by anybody's speech or statement. So the hate speech is guided and motivated by certain purposes.